Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope all of you are doing well. Dear students, it's our lecture for class 5, and today we are going to start unit number 2, the name of which is Microorganisms, Health and Diseases. In this chapter, we are going to learn about the different types of microorganisms, their structure, and their benefits, as well as their harmful effects on our body and our environment. Right? But before that, let us discuss about the living things, because microorganisms are also living things. So, what are living things? See, living things are those things which have a few characteristics. These characteristics include sensitivity, reproduction, breathing, growth, and food. Not only these 5 are the only characteristics which we study. There are some other characteristics as well, like excretion, reproduction, and some other characteristics as well. But because of shortage of time, we learn about a few of these characteristics, one of the most important of which is the food, because food is the most important necessity of life. Not a single living thing can survive without a food for 1 or 2 days. Maximum one can survive without food just for 1 week or so. Otherwise, food is the basic necessity of life. So let us first discuss about the food, and then later on we'll go into the details of the different types of microorganisms. So what is food? See, food is any substance which is eaten by the living things to survive. Means कि अगर उन्होंने ज़िंदा रहना है, they have to take something as the food. Obviously, not every organism has the same kind of food. Like if we talk about the animals, so animals, they eat ready-made food. When we talk about the plants, plants get their energy from the sunlight, and then they make their own food from just a few ingredients which are present in their surrounding, that is the carbon dioxide and water. This carbon dioxide and water, they are chemically combined in the presence of the energy of the sun, which is trapped by the chlorophyll of the plants. On the other case, the animals, they do not have a chlorophyll, so that is why they cannot prepare their own food, and that is why they have to depend upon other foods like the animal flesh, meat, plant food like vegetables, grains, etc. And what does this food give them? This food give them energy and nutrition. एनर्जी देते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं. अब एनर्जी क्या है? एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. हम बहुत सारे काम अपने लाइफ में करते रहते हैं, डेली रूटीन में भी. इवन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच नीड्स एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द फूड वी ईट, राइट? नाउ सेकंड थिंग इज़ द न्यूट्रिशन. What's a nutrition? It's a new word for you. Nutritions are a few substances which are present in the food, and they not only give us energy, but they provide our cells to grow, they provide our cells health, and in order to live longer so that we can stay away from different sorts of diseases. These are the nutritions which are provided by the food. और food के अंदर हमारे पास बहुत सारे nutrients होते हैं. Nutrients क्या हैं? ये वो components हैं, वो हिस्से हैं food के जो कि हमारे body के different parts को चाहिए होते हैं. ठीक है? अब हम ज़रा पढ़ते हैं कि ये nutrients food में कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं. So, these are number 1, carbohydrates. What is this word? Carbohydrates. Carbohydrate is the most important nutrient of food. The main function of carbohydrate is that they provide us energy. Mainly it is present in the grains, चावल, गंदम, रोटी, bread, और जितने भी मीठी चीज़ें होती हैं इन सब में होते हैं. Even some of the vegetables, they have a lot of carbohydrates like potatoes. जो आलू होते हैं उसमें बहुत सारे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं.
नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, अपना काम करते रहते हैं एंड अ टाइम कम्स व्हेन दे बिकम डैमेज्ड, या वो बीमार हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या फिर इवन उनकी डेथ हो जाती है। उन सेल्स की रिप्लेसमेंट, उन सेल्स को रिपेयर करना, ये सब काम प्रोटीन्स का होता है। और आपको पता है प्रोटीन्स किस किस चीज़ में होते हैं? यस, मोस्टली प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट इन द मीट, बीफ, बड़ा गोश्त, मटन, छोटा गोश्त, फिश। Fish has a lot of proteins, and not even in these meaty products we are having proteins. We have proteins in the eggs. Eggs जो होते हैं, अंडे हम सुबह के टाइम खाते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आपके पास दालें होती हैं, pulses, they also have a lot of proteins inside them. So if somebody is not fond of eating dal, he can go for chawal, क्योंकि चावल, राइस, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सॉरी, लेकिन दालों में आपके पास प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप प्रोटीन्स खाना चाहते हैं और आपकी बॉडी में सही प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए तो उसके लिए आपको फ़िश ज़्यादा लेना पड़ता है और बीफ जो बड़ा गोश्त होता है वो लेंगे, ठीक है। थर्ड न्यूट्रिएंट ऑफ फूड इज़ द फैट्स। तो फैट्स का नाम आते साथ ही आपके जहन में चर्बी का ख्याल आता है। इसमें दो तरह के फैट्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड द गुड फैट्स एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड द बैड फैट्स। अब गुड फैट्स क्या होते हैं? इनको कहा जाता है ऐसे फैट्स जो कि आपके बॉडी के अंदर जाते साथ ही डाइजेस्ट हो जाते हैं और जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। दे प्रोवाइड यू डबल एनर्जी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी देते हैं ना, उसके डबल ट्रिपल एनर्जी आपको फ़ैट्स से मिलती है। तो अच्छे फ़ैट्स खाने चाहिए जो कि आपके पास उसमें होते हैं नट्स में, ठीक है ना। नट्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे गुड फैट्स होते हैं। ओके, देन कम्स द वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो होते हैं ये आपके पास मोस्टली जो वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें सैलड्स आ गए, इसमें आपके पास साग वगैरह आ जाता है, तो ये आपका के लिए हेल्दी होता है, फ्री ऑफ डिजीज़ आपके बॉडी को बनाता है। मतलब वाइटामिन्स आप लेते हैं तो ये आपके बॉडी को डिजीज़ से बचा के रखता है। फिर वाइटामिन्स में ये बात होती है कि ये आपको कभी भी एनर्जी नहीं देता। रादर व्हेन यू टेक द वाइटामिन्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो जाते साथ ही आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज मोस्टली वाइटामिन्स दे आर वाटर सॉल्यूबल, पानी के साथ शामिल हो के मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ये आपके बॉडी को हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग बनाता है, सो दैट योर बॉडी शुड बी फ्री ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ डिजीज़। जैसे वाइटामिन सी अगर आप लेंगे तो आपको कभी भी फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम नहीं होगा, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इम्यून सिस्टम मीन्स कि आपकी बॉडी जो होगी वो लड़ने के काबिल हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द मिनरल्स। मिनरल्स भी आपके पास बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हर एक फूड के अंदर होती है, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, और हर एक का अपना अपना काम होता है। जैसे कैल्शियम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर टीथ एंड बोन. Same is the case with the phosphorus. Zinc is very much good for your hair and nails. मतलब आप जिंक वाले फूड खाएंगे तो आपके बाल अच्छे ग्रो करेंगे, उनमें शाइन होगी, आपके नेल्स हेल्दी होंगे। इसके अलावा आपके पास लातादाद मिनरल्स हैं, लेकिन इनको भी प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द वाटर। आपको पता है आपकी बॉडी का 75% जो हिस्सा है वो पानी से बना है। आपका हर एक सेल के अंदर 99% पानी होता है। सो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप पानी लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो पानी के साथ सॉल्युबल हो के इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या इन द फॉर्म ऑफ स्वेट आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Similarly, water is also very much important to maintain the consistency of your blood, कि वो ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला हो, ठीक है। And another very much important thing about water is that it keeps you hydrated. अगर ये पानी आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर ना हो तो फिर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और उस डिहाइड्रेशन से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ, ठीक है।
That is all for today. We'll discuss another topic in the next lecture. Thank you for today. Allah Hafiz.